Nitiji, let us know when we are live. We can start, ma'am. Ma'am, we can start. Okay. ठीक है मैम मैं स्टार्टिंग Yeah. Good afternoon everyone. On behalf of Admission Branch, University of Delhi, I welcome you all to this first webinar on postgraduate admissions at University of Delhi. As you may be aware that University of Delhi always sensitize the prospective candidates who are seeking admission to University of Delhi about the policies, rules, regulations through webinar. So that this webinar is first such webinar in this series, and today we are going to talk about the postgraduate programs for which the registration is already on. Today in this webinar, we have with us the Dean Admissions, Professor Haneed Gandhi. She will briefly tell you about the process of registration and what all programs do we have at University of Delhi and what are precautions you should take while doing registration of this program. If during the webinar you have certain questions to be asked, you can post them in the YouTube live chat. At the end of this interactive session, we'll take up those queries and we'll try to answer them. So I would now like to request Professor Haneed Gandhi, Dean Admissions, to apprise the students for this session of admission. Over to you, ma'am. Good afternoon, everyone. A very warm welcome to everybody who has joined this webinar to understand the processes of admissions at the University of Delhi for postgraduate admissions. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए। क्या हम विजिबल हैं? क्या हम आपको दिख रहे हैं? Yes, ma'am. Visible. YouTube पे डाल देंगे कि हम आपको विजिबल हैं। सो जितने भी आपके प्रश्न हो आप इसी प्लेटफॉर्म पे YouTube पे ही डालिए और एंड में जब हमारी प्रेजेंटेशन ओवर हो जाएगी तो हम आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने का भी उत्तर देने की भी कोशिश करेंगे। तो 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी पावर पॉइंट ऑन करती हूँ ताकि आप पावर पॉइंट भी देख पाए। Ma'am, I can see your presentation. I can see you, but I can't hear you. Hello? Yes, ma'am, please continue. Okay, so I hope the PowerPoint is visible to everyone. Yes, ma'am. Is the PowerPoint visible, Anand sir? Yes, ma'am, it is. ओके, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच की तरफ से ये हर साल की तरह एक आपके लिए आयोजित किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेसेस को समझाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो छात्र छात्राएं इच्छुक हैं एडमिशन लेने के लिए उनके लिए ये वेबिनार है जिसमें हम आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन
के एडमिशन से रिलेटेड जितनी प्रक्रिया है उसके बारे में समझाएंगे, यानी कि हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कैसे होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसीज है। और अगर आपके कुछ प्रश्न है वो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डालिए, हम एंड में जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम इसमें आपके प्रश्न और उत्तर भी उठाएंगे। इसमें इस वेबिनार में मेरे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं हमारे जॉइंट डीन प्रोफेसर आनंद सोनकर सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार को लाइव स्ट्रीम करवाने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रक्रिया है पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स की, वो इस साल 2025 की जो है इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। ये अब इस समय जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये एडमिशन्स की जो हमारी वेबसाइट है उसकी जो जो भी हम आपसे आज साझा कर रहे हैं वो सभी हमारी एडमिशन की वेबसाइट admission.uod.ac.in, इस पे सभी जानकारी उपलब्ध है। अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे इस वेबसाइट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे हमारी कोई प्रेस रिलीज हो, चाहे पुराना बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी अपडेट्स होते हैं वो सभी इसी वेबसाइट पे आते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स टू कीप रेफरिंग टू दिस वेबसाइट एंड मेक इट अ हैबिट कि आप हर कुछ दिनों में इस वेबसाइट पे जरूर देखें, ताकि आप जितनी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, शेड्यूल्स हैं, उसके रूबरू रहें और रेगुलरली उसको अपडेटेड रहें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, admission.uod.ac.in। इस पे सभी जानकारी जो आज हम आपके साथ साझा करें, इनफैक्ट इस वेबिनार का भी जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप किसी भी टाइम चाहें तो रिवाइंड करके कुछ भी अगर आपको समझना है तो आप रेफर कर सकते हैं। सो इन दिस यू हैव टू गो टू पीजी एडमिशंस और यहाँ आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आप जब पीजी एडमिशन पे जाएंगे तो आपको एक पीजी सीसास का लिंक मिलेगा जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है फॉर एडमिशंस टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पीजी सीसास यानी हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस या डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेने के लिए बस एकमात्र एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पीजी सीसास, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा और जितनी भी जानकारी आपके पास है, जो भी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी होगी वो इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी आपकी एलोकेशन से रिलेटेड जानकारी, अगर आपसे कोई डिपार्टमेंट कुछ बातचीत करना चाहता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो है pgadmission.uod.ac.in। इस पे जाके अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है ऑरेंज बॉक्स में आपको दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस पे जाएंगे और इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? अपना सीयूईटी नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और जो ईमेल आईडी आपने सीयूईटी में भरा था, तो आपके पास ये चीजें रेडी होनी चाहिए। जिस सीयूईटी नंबर जिससे आपने सीयूईटी दिया था, आपका फोन नंबर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपने ईमेल आईडी दिया था, जो सीयूईटी में दिया था, और यहाँ भी वही ईमेल आईडी चलेगी, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा। फिर आप लॉग इन करके उस ओटीपी आईडी को भरेंगे और फिर आप होम पेज पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, यानी अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कई बच्चे हमारे पास सीधा लॉग इन करते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाते हैं, तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और तभी अपना लॉगिन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे तब आपके पास, आप जो होम पेज पे जाएंगे जिसका URL ये होगा pgadmission.uod.ac.in/index.php/site वगैरह वगैरह, वहां पर आपके पास 3 प्रोफाइल खुलेंगे, 3 टैब्स खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन जो आप कर चुके हैं, अब सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। प्रोफाइल यानी आपकी बेसिक जानकारी, बेसिक आपके बारे में जानकारी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करता है कि सीयूईटी का जो आपने नंबर दिया था, वहां से आपका नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये ऑटो इंटीग्रेटेड होंगे और इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी जो नाम आपने सीयूईटी पीजी में दिया था
वही नाम आपको दिखेगा और वो नॉन एडिटेबल होगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जो फोटोग्राफ आपने दी थी वो भी वैसी की वैसी रहेगी और सिग्नेचर भी। रेस्ट ऑफ द फील्ड जो है उन्हें आप चेंज करके अपनी प्रोफाइल पूरी भरेंगे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी, अपनी सोशल कैटेगरी, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी जैसे PWD है, CW है, या और अन्य जानकारी किस किस बारे में आपने कहाँ से क्लास 10th 12th की और आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है, ये सब जानकारी, आपका एड्रेस, माता पिता का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये बेसिक प्रोफाइल है, ये आप क्रिएट करेंगे। ये प्रोफाइल एक ही बार क्रिएट होगी और अगर आप इसको लॉक और सबमिट कर देंगे तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हर प्रोफाइल में आप देखेंगे जैसे ही आप प्रोफाइल बनाएंगे फिर आपके पास एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रीव्यू को देख लीजिए, एक एक जानकारी पढ़ लीजिए दोबारा। अगर कोई चेंज करना है तो बैक में जाइए और अपडेट कर लीजिए अपनी इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे आप प्रीव्यू को क्लिक करेंगे फिर अगला पेज आएगा, फिर हम दिखाते हैं आपको, फिर प्रीव्यू कर लीजिए। तो हर स्टेज पे हम आपको सब्सीक्वेंट प्रीव्यू दिखाते रहते हैं ताकि आप देखते रहे आप क्या एंटर कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी जानकारी गलत हुई है तो उसे वहीं के वहीं ठीक कर लीजिए। एक बार आप प्रोफाइल लॉग और सबमिट कर देंगे तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आपके सारे जो दस्तावेज है, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी सिलेक्ट की है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। SC ST सिलेक्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको करना होगा। PWD है तो PWD का सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट की और जानकारी हम थोड़ी देर बाद में एंड में आएंगे, जो मेरे मित्र प्रोफेसर आनंद सोनकर बताएंगे। प्रोफाइल जैसे मैंने कि आपको कहा, कमिंग बैक टू प्रोफाइल, प्रोफाइल एक बार आपने सबमिट कर दी वो चेंज नहीं है। अब प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद आप जितने भी प्रोग्राम्स जिसपे आप एलिजिबल हैं COET के आधार पर, वो प्रोग्राम्स अब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो आपके होम पेज पे जब आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर लेंगे तो साथ में ऊपर लिखा होगा सिलेक्ट प्रोग्राम्स। आप प्रोग्राम सिलेक्ट करिए, वो वही प्रोग्राम सिलेक्ट कर पाएंगे आप जो आपने COET में पेपर दिया था और हमारी एलिजिबिलिटी पे मैच करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉ करना चाहते हैं, अगर आपने CUQP 11 दिया है तो आप लॉ आपके सामने दिखेगा, और भी अन्य प्रोग्राम जो CUQP 11 के साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपको दिखेंगे। तो आप उन प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। एक बार वो सिलेक्ट करेंगे फिर आप उसके बाद उसके डिपार्टमेंट से उसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद हम जान जाएंगे कि आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया नहीं है। एडमिशन सेलेक्ट करने के बाद या प्रोग्राम प्रोफाइल सिलेक्शन, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फिर दोबारा से हम दोहरा रहे हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी है। प्रोफाइल सेक्शन में जैसा कि कहा, आप अपने माता पिता का नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगर आप सुपर न्यूमररी कोटा के लिए अप्लाई करने चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जानकारी, मेल या फीमेल है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि हमारा NC वेब है वो, या कुछ कॉलेजेस जैसे हमारा दौलत राम कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है, ये जेंडर स्पेसिफिक है। अगर आप फीमेल भरेंगे तभी आपको ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में दिखेंगे। आपका ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो आपने CUET में भरा था। आपका मोबाइल नंबर वही हो जिसपे आपको सारी जानकारी आएगी, OTP वगैरह भी इसी पे आएगा। और सबसे आखिरी बात है आपका बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स करेक्ट हो, IFSC कोड ठीक हो, ताकि अगर हम कभी भी कोई रिफंड जाता है या कोई भी प्रोसेस होता है तो आपको इसी बैंक में वापस जाएगा। जो लड़कियां NC वेब में एडमिशन लेना चाहती हैं, NC वेब यानी कि हमारा नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, ये उन लड़कियों के लिए मान्यता रखता है जो दिल्ली NCR के हैं। तो ओनली वुमेन कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन NCT ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आर नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड। इनके NC वेब के PG के एडमिशन भी इसी प्लेटफॉर्म से होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपका डोमिसाइल जो है आप उसे दिल्ली क्लिक करेंगे, आप अपना रेजिडेंस प्रूफ लगाएंगे जो आपके नाम पर आधारित हो, यानी जो भी आप अपना रेजिडेंस प्रूफ लगाएंगे उसमें आपका नाम मेंशन जरूर होना चाहिए। आपके साथ इसके साथ साथ आपके पास या तो आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी राशन कार्ड जो आपके नाम पे आधारित हो, वो जरूर होना चाहिए। और अगर इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप NC वेब की वेबसाइट ncweb.tu.ac.in पर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, दोबारा वहीं जाते हैं प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद।
जैसे ही आप प्रोफाइल सबमिट कर लेंगे तब उसके बाद आप प्रोग्राम सिलेक्शंस कर पाएंगे और यहाँ से आप अपनी प्रोग्राम की प्रेफरेंस दे पाएंगे। तो जो प्रोग्राम्स आपने सीयूईटी में टेस्ट पेपर दिया होगा, जो मैं उदाहरण पहले भी दे रही थी, उसी के आधार पर आपको वो सारे प्रोग्राम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने CUQP 11 चुना था और CUQP 11 से हमारे मान लीजिए 2-3 प्रोग्राम्स जुड़े हुए हैं, तो वो आपको सभी प्रोग्राम्स दिखेंगे। अब आपके ऊपर आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही फिर आपका CUET का नंबर हमारे पास मिल जाएगा उस प्रोग्राम से रिलेटेड। यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है कि आप जो प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे उसी में आपकी एलोकेशन की जाएगी। एलोकेशन का आधार जो है, इसके बाद जब आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी आगे की जो प्रक्रिया है उसमें मैं अपने दोस्त हमारे जॉइंट डीन प्रोफेसर आनंद सोनकर जी को इनवाइट करती हूँ आगे की प्रक्रिया बताने के लिए। लेकिन एक बहुत कॉमन क्वेरी है जो मैं यहाँ रिजॉल्व करना चाहती हूँ। जैसे ही वही बच्चे हमारा प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें प्रोग्राम दिख नहीं रहा, तो आप सब अपने अगर होम पेज पे जाएंगे तो आपको वो प्रोग्राम दिखेगा। लेकिन प्रोग्राम सिलेक्शन सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है आपको लेने का। जब तक आप प्रोग्राम स्पेसिफिक फीस नहीं दे देंगे, हम आपको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। यानी हर प्रोग्राम से रिलेटेड 250 रुपए या 100 रुपए, जो भी आपकी कैटेगरी है, उस पर आधारित फीस है। तो अगर आप एक प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो आपको 250 रुपीज अपने उसके जमा करने होंगे। अगर आप 2 प्रोग्राम लेते हैं और यूआर कैटेगरी के रहे तो 500 रुपीज। तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम करते सिलेक्ट करते जाएंगे, फॉर ईच प्रोग्राम व्हेन यू विल कंप्लीट, आप उससे रिस्पेक्टिवली फीस सबमिट करेंगे। कंफर्मेशन और री कंफर्मेशन ऑफ फीस इज एन इंडिकेशन दैट यू कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब इसकी आगे की प्रक्रिया के लिए प्रोफेसर आनंद सुनकर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। Thank you, ma'am. I'll just share the screen so that I can continue with this presentation. So I'll stop sharing from here. Can you see the screen, ma'am? Hello? Yes, Anand sir, I can see the screen. It's visible. Okay, fine. So I'll just continue with this, that after once you have selected the program, now you have to provide preferences of the programs, because each program is offered by multiple institutions. So all those programs which are offering that program will be shown on your screen, including NCWeb, if that program is offered by NCWeb and if the candidate is female resident of Delhi. So according to your preference or your choice, you just rank them. So it is very important that you should do this exercise very carefully, give preference very carefully, because allocation will be dependent on that. So your first, we'll try to give you first preference of yours. If not, then second and third, fourth, and so on. So your preference list here plays a very, very important role, and try to give as much preferences as you would like to, give. Then in academic section, you have to provide details for your educational background, the graduation subject, from which university you have done, what are the marks you have obtained. Then the percentage obtained in qualifying degree is very important, because that is also in part of eligibility criteria, and whether the candidate is appearing or appeared. So if you have appeared in the class in the qualifying examination, then you have to upload the mark sheet of last all 6 semesters. But if you are appearing, then you have to upload only for the last 5 semesters, or whatever the case is. If it is for 4-year degree program, accordingly you have to have other semesters. Then most important section is the conversion of CGPA to percentage, because we very specifically ask you to fill up percentage on the portal and not CGPA. So this step is very, very important, and take care, because if you accidentally put CGPA, you may not meet our minimum qualifying marks, because that is according to the percentage. So, and then you will not be able to see any allocation. So please be very careful in that step. And then the next step is allocation. So based upon the social category and the program based merit list and availability of seats, the allocation will be done. This allocation will be seen only on the dashboard.
So for this, it is very important that you see the schedule, which will be very soon announced by University of Delhi, that when the first list will be declared, what will be the timings of payment of fees from which date to which date, when the college will do verification, they may ask you certain queries. So that is very important. That schedule is still not released. That schedule will be released, and that will be available on the admission website, which Professor Gandhi showed initially, www.admission.eod.ac.in. So just check the schedule and just check your dashboard. Once a seat is allocated, then you have to do acceptance. Accepting seat is very important for the first time. Once you accept it, then the college will do verification of document. Now here also comes very important aspect. If, for example, you are applying for, let's say, MA History, and you have been allocated a seat in MA History, but if you do not accept it through your dashboard, then we'll assume that you are not interested in taking admission in that program. And you will no longer be offered any other seat in that program. Like, it will be taken as that you are not interested in that particular program. So this is very important step, and take care. If you have accepted the allocation, the college will process your documents, and if they have any query, they will reach back to you by query tab on your dashboard. So the college will raise the query. The query also will be visible to you on your dashboard. Check your dashboard carefully, regularly, every day after you have selected acceptance. Okay, and whatever query the college has, it may so happen that the mark sheet you uploaded is not very legible. So they may ask you to send it again. Or if they have any other query or clarification, they'll ask you. So please make sure that you provide definite answer to that query. After that, the department, center, or college, whatever the case may be, they will approve your candidature, and then you pay the fees. Again, I am repeating, the fees has to be paid through the dashboard. Okay, the fees is not taken by the University of Delhi by any other means. Dashboard is the only place through which the fees has to be paid. So you have to be very, very careful that log into your dashboard. From there, you will be able to see a tab, pay fees. Click on that and pay the fees. And if you fail to pay the fees, again, we'll assume that you are not interested in that seat, and your seat will be cancelled, and subsequent round also, you will not be allocated any seat. Now, you may have given multiple preferences. You may not get your first preference in first round of allocation. So there's a chance of upgrade. So if you're not happy with the seat which you have got, you can apply for upgrade. So once you pay the fees, then after that, you'll be able to see a button for upgrade. If you wish to upgrade, you can press that button. And if there are seats available in the subsequent round, depending upon the social category, the score, and other factors, you may be upgraded. So this option is also available on your dashboard. If you are happy wherever you are, you can press the freeze button. Okay. But please be very, very careful when you press the freeze button, because once you freeze it, we cannot unfreeze it. So that is, many a times we get multiple representations later that now we want to unfreeze and go for upgrade. So that will not be possible. So please, I request you that read the chapter of upgrade or freeze in the CSAS very, very carefully before you take any action. Okay. Then there are certain programs where there are performance-based selections. Like there will be auditions in MA Music. There are sports program where there will be trials, and Master of Fine Arts where also there will be a trial. So it is very important for you to now appear in that trial. Okay. The merit list will be made by a cumulative score of CUET score plus the trial. So please make sure that if you're applying either for MA Music or MPET or BPET, that is Master of Physical Education and Bachelor of Physical Education or Master of Fine Arts, please look at the website of these departments or colleges, whatever the case may be, and then see the schedule, appear in the trial, and make sure that you are there. Otherwise, you will not be included in the final merit list. University of Delhi, as you know, is a central university, and we also offer certain supernumerary quotas. So we have for people with benchmark disabilities. Then we also have it for children or widows of personnel of the armed forces, orphan quota. And from this year, you will also be able to see single girl child quota.
So for all of them, the suggestive formats in which you have to apply, they are also available in the CSAS document. Just see them carefully and kindly do the desired selection while selecting your profile and upload the relevant document as it comes in the last finger. So this is the list of document which you'll be needing to upload. So just keep them handy before you start your registration. You need to have a photograph, a good quality photograph, a signature of the candidate, proof of the date of birth, mark sheet of the qualifying degree, then SC, ST, OBC, EW, CW or PW certificate as applicable. And in case of OBC certificate, it should clearly mention that it is non-creamy layer, and both OBC and EWS certificate should be issued after March 31st, 2025. Please make sure that you apply for these recent ones because their validity is only for 1 financial year, and accordingly they will be required in the subsequent queries. So for any queries, you can write to us at pg@admission.du.ac.in. The website is also being displayed here in the presentation, and this is our contact number. So I think with this, I'll close and I'll just now take up certain questions from the YouTube chat. So I'm sharing my screen, and just give me a moment. I'll start taking up section. Okay. Haneet ma'am, are you there? Yes, I'm here. So I don't know, I was also looking if there are any questions. So you need to close your screen first. Yeah, I'm just trying to do that, ma'am, again. Unshare maybe? Okay. Yeah, yeah. Is it fine, ma'am? Yeah. Haneet ma'am? Is the It seems to be screen gone? fine. It It's seems still there? to be fine. We need to now, let's see if there are any questions. Yeah. So what I can see, the first question is about, again, the conversion of SGPA to percentage. Sorry, the question related. So there are to GPA to percentage. Your voice is breaking, Anand. Can you hear me, ma'am? Huh? Haneet ma'am, can you hear me? Yes. Yeah, I can hear you. So I was saying that this question is about conversion of SGPA to percentage, that how can they do it? There are some candidates who are not clear about it. Okay. So for this, you need to refer, see, every university has a conversion rule. You have to refer to your mark sheet and see what is the conversion rule that your university has stated. For Delhi University, recently we have adopted to a conversion formula of 10, which means whatever your CGPA is into 10, that's your percentage. But this is a very recent one. I think past 2 years we've done. अगर उसके पहले का था तो 9.5 है. So you need to check your mark sheet and ascertain कि आपका क्या वो है कन्वर्जन फॉर्मूला है. सो हर यूनिवर्सिटी का दिया होता है और आप अपनी मार्कशीट में देखिए. रेफर टू योर मार्कशीट फॉर दिस. Okay, yeah. So next, Kushal wants to know that he'll be graduating this year, and does he need to submit any migration certificate or any undertaking for the same? So if you've passed out from University of Delhi, then you don't have to submit any migration certificate. But to ascertain that, we will definitely need your I card. तो आप अपना आई कार्ड सबमिट करिए. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको माइग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको माइग्रेशन लेनी पड़ेगी. अगर इस समय आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो अंडरटेकिंग हमने दिया हुआ है उसको दे दीजिए. इनफैक्ट ये अंडरटेकिंग से मुझे एक चीज और भी कहनी है. बहुत सारे बच्चों का अभी रिजल्ट भी नहीं आया होगा और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं. फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट नहीं आया है, आपको भी एक अंडरटेकिंग देनी है
that by 31st of October आप अपना जो minimum eligibility उसको meet कर लेंगे. In case you are unable to meet the minimum eligibility by 31st of October, the University of Delhi is bound to cancel your admission without giving any notice to it. So you have to ensure that you pass your qualifying examination by 31st of October. In case you are not able to do it, we will cancel your admission. So there are two undertakings that most of the students will be giving. One would be related to migration certificate, and the other would be related to passing or meeting the minimum eligibility. I think, yes, that is a very important information which they must do. Otherwise, it will be very difficult for the college to ascertain that whether they are. So the next question comes from Vansh, and he's asking about the uploads in the last profile, which says upload document has a section where you ask for, like we ask for provisional mark sheet or certificate or degree. So what exactly has to be uploaded? He is a bit confused. So I'm glad Vansh has asked a very pertinent question, because most of the students, sometimes they do have this issue of understanding what would they have to upload. It's very simple. If you have, so this is directly related to, see, as you would see, the tie-breaking rules are dependent upon your mark sheet, upon the marks that you got in the last 5 semesters. तो अगर आपके पास प्रोविजनल मार्क शीट है तो हमें पता चल जाएगा कि आपने अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी अंडर ग्रेजुएट मीट करा है. अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री अपलोड कर लीजिए. अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपनी मार्कशीट्स को एक उसमें स्कैन करके उसे अपलोड कर दीजिए. So this is an oblique, that means whatever you have, whichever goes best into your favor, you upload those documents here to ascertain your minimum eligibility. We only need that you have passed your undergraduate by this date. If you do not have a certificate in substantiating your claim, तो आप कुछ भी जो भी आपके पास इस समय उपलब्ध है, यानी आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट डाल दीजिए, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री डाल दीजिए. तो वो हम यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं. Okay, yeah. Thank you, ma'am. So another question is about, the eligibility that some students have ER in their results. So can they apply? They're not clear about it. As I But said, yeah, that's what I don't know. ER, yeah. As I said that if you have an ER, you may apply right now, but you'll have to give an undertaking that by 31st of October, you will be clearing all your undergraduate examinations, the minimum eligibility. Now, we don't know where your ER is. If suppose the ER is in a 4th semester, पहले 4th semester में थी और 6th semester के साथ आप clear कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका clear हो जाए. लेकिन अगर आपका 5th semester की ER थी, तो likelihood है कि आप अभी 31st अक्टूबर तक ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाएंगे. तो ये अब आपको देखना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है. हमने आपको सिर्फ इतनी लेवरेज दे दी है कि 31st अक्टूबर तक आपके पास सारी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी मीट करे, यानी कि with 50% marks you should be qualified by 31st of October. Now this is upon you to decide whether you will be able to fulfill this by 31st of October or not. Yeah, next question is very interesting. I think they have done some homework about our last year's exercise and they are expecting a correction window. So one of the student wants to know that in the coming correction window, can they re-upload their documents? I don't know how much we can answer that question as of this moment. Yeah, I know. पहले तो हमें लगता है कि आप लोग, हम कोशिश हर साल ये करते हैं कि करेक्शन विंडो ना खोलें, लेकिन फिर हमारे पास ये बहुत सारे बच्चे जो गलती कर लेते हैं. जैसा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा, we give you all the opportunities to re-look at your application several times. There are a lot of reviews. But now that we know that you have done a mistake and it is now our responsibility to correct your mistake, we are likely to open a correction window. So wait for the announcement, the official announcement for opening the correction window. However, I wish to tell all the candidates who wish to do any correction, the correction window will be very short-lived, maybe not more than 2 days. So please be ready and be very, very vigilant on the website for the schedule.
ये 6 जून तक तो रजिस्ट्रेशन ही है. The last date of registration is 6 June. And near about that, we will make an announcement for your correction window as well. But I want to, again say to all the candidates who are here to be very careful in this correction window. अगर correction window में भी गलती कर दी, तो correction window की correction नहीं होगी. So there will be correction window to the correction window. And I think correction window is just one-time facility. It's a one-time facility, that's right. Yeah. Any mistake that you've done, we will give you an opportunity to correct it, but it will be only a one-time facility. Which means अगर आपने correct करके प्रोफाइल, मान लीजिए आपकी 2 करेक्शंस थी, आपने एक करके प्रोफाइल सबमिट कर दी, तो आप दोबारा प्रोफाइल भी नहीं खोल पाएंगे. तो सारी करेक्शंस आपको एक ही बार में करके फिर अपनी प्रोफाइल लॉक कर देंगे. और एक बार आपने प्रोफाइल लॉक कर दी तो आपको अब बार बार नहीं हम खोलने के मौका दे पाएंगे. सो बी वेरी केयरफुल इन द करेक्शन विंडो ऑल्सो. जो भी आपकी करेक्शन करनी है, इसको एक पेपर पे नोट करके रख लीजिए, एक ही बार अपडेट करिएगा और फिर प्रोफाइल को लॉक करिएगा. Next question is from Anushweta Patnayak. I don't think this is applicable. She is saying that she wants to apply for sports quota, but she is not able to see any option which is open for national players. But I guess we have options for national players, don't we? So there are no separate options. अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं. आप एक बार देख लीजिए, if your certificates are uploaded well, then the sports council will assess your certificates. That's it. There is nothing like a national quota. If there is anything very, very specific, then you may write to us at our help desk, pgadmission@du.ac.in. So if there's very specific thing, send us the screenshot of your problem, and then we will be able to resolve it. But there is no as such a separate quota for any national or international drop down. But if there is something that you want an immediate attention, then please email to us with the screenshot. So Anshu Yashashvi also has a very interesting question. She says that she has selected a program. The page has now freezed and she is unable to see that program. I think probably she was trying to fill it up and left it halfway. Correct. So it seems that, we already answered this, that in case आपने थोड़ा सा प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया होगा, अब आपके होम पेज पे वो प्रोग्राम नीचे दिख रहा होगा. तो अगर आपको वहां नहीं दिख रहा प्रोग्राम, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आप सिलेक्ट कर चुकी हैं. तो एक बार आप होम पेज पे वापस जाइए, नीचे देखिए, आपको वो प्रोग्राम दिख रहा होगा. And I think I also wanted to remind you to tell our viewers about the issuing date of OBC and EWS certificates. Yeah, I mentioned it, ma'am, that it has to be categorically after 31st March 2025. So that means effectively 1st April onwards, they have to have their certificates. I think they can get it renewed. I think April has gone. It's almost May is also over. And we are also open for up to 6th of June. So I think till then they can get it. And one more thing, which just reminded me when you were telling me that scroll down and go to the home page. It's very often we advise the candidates that please do not fill up your form from mobile phones. Kindly use a desktop or a laptop where you can, on a wider screen, you can see the all tabs very carefully scroll down. Because on mobile, sometimes, you miss out. Everything is so tiny. You sometimes miss out those things. And then you submit your form, then effectively you realize that you have left certain columns unattended. And then you eagerly wait for an correction window. So I think it's an advice to everybody that please log on, on a big screen device where you can actually see it carefully. I'll just take up the next question. I think I'd like to add one more thing. Many students face problem while filling the form because they are, ये तो important है कि आप फोन से ना करें, डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें. लेकिन एक और बहुत important बात है कि आपका ब्राउजर भी अपडेटेड होना चाहिए. Make sure that your browser is updated. Often, sometimes if the browser is not updated, तो वो आपकी हिस्ट्री में चला जाता है और आपको बार बार वही दिक्कत आ रही होती है कि वो आपके जो भी आप प्रोफाइल फिल करने की कोशिश करें या कुछ भी करें, वो वही चीज उठा रहे हैं जो आप पहले फिल कर चुके हैं. तो अगर आपके ऐसी दिक्कत आ रही है तो प्लीज एक बार आप अपना कैशे क्लियर करके, हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉग इन करके देखें. तो ये भी अगर आपका ब्राउजर पुराना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सिस्टम इज अपडेटेड एंड द ब्राउजर इज also updated. Chrome or whichever you are using, it should be updated. So it's very important that
आपका डेस्कटॉप में भी जो आपका है वो भी अपडेटेड हो सॉफ्टवेयर. And there's a very interesting question about freeze and exit. So there's somebody called Fine Fettel, I don't know what's the name is. It says it after freeze. Can you hear me, ma'am? I lost you in between, so Yeah, I'm just could you saying repeat it? that there's somebody, they want to know that what can they exit once they have frozen a particular seat? Once they apply for freeze, can they still So no. exit from our system? Uh-huh. I don't know what you mean by. Can I you can hear hear me? you. I don't know whether what you're trying to ask. Yeah. It seems that you want to withdraw. If you saying that after freezing the seat, you want to withdraw and exit from University of Delhi, that option would always be there. You can withdraw anytime, but you will lose the candidature. You will not be considered. That seat obviously will be lost. And since you've taken a withdrawal, then you will not be reconsidered. Once frozen also, once you opted for freeze also, then also we will not consider you for any other program or any other seat anywhere in University of Delhi. So freezing means that you're happy with the seat, happy with the program, happy with the allocation, no other allocation at all. Withdrawal is always open after freeze or upgrade. Whatever you choose, withdrawal is always open. Once submitted the withdrawal, we will, your refund will get generated and you will be pushed out of the system. Yes. Okay. So, ma'am, there are many students who are constant. Can you hear me, ma'am? Yeah. Yes, I So can. there are many students who are writing that they do not have access to the email account by which they logged in on the CUET, and they're not able to get OTP. So they want that OTP should be given on the mobile phone as well. This is what I can. Yeah. See, it's a very tough question. अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम आपको दोबारा ईमेल आईडी तो नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि ये जेन्युइन आप साइबर जेन्युइननेस से भी रिलेटेड है, विच मींस यू आर द सेम कैंडिडेट जो सीयूईटी में बैठे थे, तो ईमेल आईडी तो आपको वही याद करनी पड़ेगी जो आपने सीयूईटी में भरी थी, क्योंकि सीयूईटी की भी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी उसी ईमेल आईडी पे हुई होगी. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड टू असर्टेन द जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेट. याद करिए, कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, इतनी इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी थी, उसे आप यूज कैसे कर सकते हैं, लूज कैसे कर सकते हैं. तो एक बार याद करके देखिए, बिकॉज इसके अलावा तो और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है. उसी ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा. फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए तो वही डेटा होगा जो आपने सीयूईटी में यूज किया था. योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर ईमेल आईडी. We won't be able to change that. Okay. I think, ma'am, there are a lot of other questions also, and some of them are getting repeated. So I think we can close it now, and I can just request the participants that the email ID which I had shown, pg@admission.edu.ac.in. If you have still some more queries, you can write up there. I also showed you one phone number at which you can call. The recording of this webinar will be available on the official YouTube channel of the University of Delhi. You can see it again, and you can write it to us. I think with this, we would like to close this session. And if there are just some closing remarks from the dean. So I would just like to thank everyone who has joined. And as Professor Sonkar said, this recording would be available. If you have any questions, you can post your questions on our help desk, which is also there on the website. Please keep visiting the website at a very, very regular basis for all updates and anything. If you are vigilant and if you've done your homework well, your form is submitted well, तो आप घर बैठ के एडमिशन कर सकते हैं. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एडमिशन ब्रांच जाने की तो बिल्कुल कतई जरूरत नहीं इतनी गर्मी में. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू योर प्रोसेसेस वेल. अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, उन्हें कलेक्ट कर लीजिए और देख लीजिए कि सब एवरीथिंग इज इन प्लेस. And in the end, I just want to thank every one of you for listening to this webinar. We are very ready to welcoming you to starting the new session of our PG students very soon. For all the updates and schedules, it will be
there on the website, admission.uole.ac.in. उसे देखते रहिए regularly. And at the end, I think we need to thank everybody who has taken efforts in making this webinar successful. The DUCC team, the team at the admission branch, the entire team of the admission branch, and of course, our mentors, which is our registrar sir, and obviously, and finally, our the whole soul leader of the university, our Honorable Vice Chancellor, sir, who's extremely motivating, and he always is very supportive to the students and to the faculty of University of Delhi. So on that behalf, on the behalf of University of Delhi, through our officials, I welcome you all to the University of Delhi and keep looking at the website regularly. That's the only thing that I want to say at the end. Thank you and good luck to everyone.